This is All India Radio. Welcome to the business news program Money Matters. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत की ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से। India and EU agreed to further deepen bilateral trade and investment relationship in the first India-EU high-level dialogue on trade and investment. Benchmark indices logged gains around 9.5% in the business week ended yesterday. Sensex and the Nifty hit fresh lifetime highs. And now the news in detail. India and EU have agreed to further deepen bilateral trade and investment relationship in the first India-EU high-level dialogue on trade and investment. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and the European Union Executive Vice President and Trade Commissioner Valdis Dombrovskis yesterday co-chaired the first India-EU dialogue. The 15th India-EU Leadership Summit held in July last year had committed to establish this dialogue. The ministers agreed to meet within the next 3 months to reach a consensus on a host of bilateral trade and investment cooperation issues such as bilateral regulatory dialogue and an India-EU multilateral dialogue. Joining us now to throw lights on various stories that we have with us is Sharad Kohli, market expert. Sharad, we welcome you to Money Matters. Thank you. Thank you so much. Sharad, the ministers, the EU and India ministers emphasized the importance of global cooperation and solidarity post the COVID-19 era, and this will take the trade and investment between India and the European Union to deeper levels. What do you say? Well, absolutely. If you see Europe was also involved in the RCEP, some of the European nations, and I think because Europe has been one of the biggest sufferers of the COVID-19 impact, I would say, in terms of business. Even as we talk today, a lot of European economies and major ones, we include the UK, the Germany, France, Italy, they are still either fully or partially under lockdown. So I think they have really suffered, and they are looking for more and more avenues to resurrect themselves and to get back to business. Also, the other reason why EU is getting active is because after Brexit, I think, United Kingdom becoming a separate nation, not part of EU, I think EU wants to sort of realign its trade agreements with other countries in Asia and other places to see that it does not really suffer the losses which may be seen because of Brexit happening. So I think for two reasons. One is because of Brexit. Second reason, pandemic has really hit Europe very hard. And I think it is wanting to get back to business as soon as possible. And the fact is that the European or the American markets, the Indian markets are kind of mirroring what's happening there. And since Europe seems to be now getting strengthened and US with Biden's support is going to give India a lot of impetus in trade, you think that will have its repercussion on the Indian markets as well going forward? Well, I think it will help India in more ways than one, because unification of a trade deal between America and the Europe, or if I put it in a different way, that stronger trade relations between Europe and the US will have a benefit for India, because China plus one policy which the rest of the world is looking because of China. I think India is going to be a direct beneficiary, and I think more important for both the continents, America and Europe, would be to first come out of the pandemic, because the pandemic impact in Europe, so that I know, I'm quite hotly in touch with some of these countries' economies. They've been really suffering, and I think they are on the verge, and some of the economies are on the verge of an absolute collapse if they are not able to hold themselves. In fact, the European Union Commission based out of Belgium has been in Brussels, has been deliberating this over the last few weeks, that how and in what way can European Union help these countries to resurrect themselves.
But yes, notwithstanding the pandemic, the trade deals are going to be benefiting India, and India can look forward to some very, very, I would say, enthusiastic and very bright future in terms of trade deals. और चलते हैं शेयर बाजार का हाल जान लेते हैं। कल समाप्त हुए सप्ताह में शेयर बाजारों में काफी तेजी दिखाई दी। केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद से प्रमुख घरेलू शेयरों ने लगभग 9.5% की छलांग लगाई। रिजर्व बैंक ने कल ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने की घोषणा की थी, जिसके बाद बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। रिजर्व बैंक ने विकास की गति बढ़ाने के लिए कल मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों की भी घोषणा की थी। देश के अंदर कोरोना की वैक्सीन के वितरण में तेजी और दुनिया से आ रहे अच्छे संकेत, अमरीकी प्रोत्साहन उपाय और विकास को लेकर आशा के बीच घरेलू शेयर बाजारों ने अच्छा प्रदर्शन किया। सेंसेक्स 9.61% यानी 4,446 अंक बढ़कर 50,732 अंकों पर पहुंच गया। निफ्टी 9.46% यानी 1,290 अंकों की तेजी के साथ 14,924 अंकों पर जा पहुंचा। कल दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 51,073 और निफ्टी ने 15,015 अंकों की ऊंचाई को छुआ। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी बढ़त दिखाई दी, लेकिन सेंसेक्स के मुकाबले उसका प्रदर्शन कम रहा। मिड कैप इंडेक्स 7.36% और स्मॉल कैप इंडेक्स 6.61% बढ़ा। शरद, आप क्या कहेंगे? शेयर बाजार इस सप्ताह भी लगातार तेजी की ओर रहा और उसके क्या कारण हैं आपके हिसाब से, और आप अगले सप्ताह किस तरह का आउटलुक देखते हैं? मुझे लगता है कि बजट ने शेयर बाजार ने बजट का बहुत दोनों हाथों से स्वागत किया है, और बजट में जो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत थ्रस्ट दिया है, जिसकी सख्त जरूरत थी, और फिस्कल डेफिसिट की परवाह ना करते हुए गवर्नमेंट ने दिल खोल के स्पेंड किया, उसका बाजार ने बहुत स्वागत किया। इसके अलावा हम देखें तो जो अमेरिका से भी आने वाले संकेत है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बहुत अच्छे रहे। दूसरा एक मैं और मुख्य कारण मानता हूं कि जो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं Q3 के, वो रिजल्ट्स जो नतीजे हमें उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, जबकि लोगों को उम्मीद थी शायद ये साल पूरा का पूरा घाटे में चला जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लग रहा है बाजार ने बजट का स्वागत किया है। दूसरा, Q3 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दिसंबर क्वार्टर के, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। अमेरिका में $1.9 ट्रिलियन का जो पैकेज बाइडेन साहब ने प्रपोज किया हुआ है, उसके पास होने के संकेत बहुत जल्दी मिल रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर शेयर बाजार उत्साहित है। अगले हफ्ते के लिए मैं समझता हूं कि थोड़ा सा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड यूएस में बढ़ रहे हैं, 1.38 के पास पहुंच गए हैं, तो मैं समझता हूं हमारे निवेशकों को और ट्रेडर्स को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और अच्छे स्टॉक्स में ही निवेश करें। और मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप पे ज्यादा अच्छी उम्मीद दिखती है लार्ज कैप के मुकाबले। मूविंग ऑन, फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman announced several measures to augment road infrastructure in the Union Budget 2021-22 presented in the Parliament on Monday. An enhanced outlay of more than 1,18,000 crore rupees has been provided for Ministry of Road Transport and Highways. और सरकार ने 4 अन्य राज्यों असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को भी खुले बाजार से ऋण लेकर 5,034 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दे दी है। And in the US, the Dow Jones Industrial Average and S&P 500 rose for a fifth straight session and the longest streak of gains since August, while the S&P 500 and Nasdaq posted record closing highs for a second day in a row. Thank you, Sharad, for being with us. Thank you. And before we close, the headlines. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और EU उच्च स्तरीय बैठक में आपसी व्यापार और निवेश को और अधिक बढ़ाने पर सहमत हुए। कल समाप्त हुए सप्ताह में घरेलू शेयर बाजारों में लगभग 9.5% की तेजी दिखाई दी और सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। And that's all we have in this edition of Money Matters. Do tune in at 6:30 p.m. to listen to our program Market Mantra. For now, goodbye.